తెలంగాణలో కొంతమంది ఎన్నికల అధికారులు బీఆర్ఎస్ సర్కార్కు అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ నేతలు. ఢిల్లీలో ఎన్నికల కమిషన్ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. పదవీ విరమణ చేసిన చాలా మంది అధికారులకు ఎన్నికల బాధ్యతలు అప్పగించారని ఆరోపించారు రేవంత్ రెడ్డి. ఇక రెండో విడత అభ్యర్థుల ఎంపికపై కాంగ్రెస్ కేంద్ర ఎన్నికల కమిటీ సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. దాదాపు 5 గంటల పాటు అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చించారు. వామపక్షాలతో పొత్తు కూడా సమావేశంలో ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. సమావేశానికి సోనియా, రాహుల్, ఖర్గే సహా కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. అన్ని స్థానాలకు రేపు అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. कि कार्यकाल में भी जिस तरीके से वायलेंस वो हर इस पर सब्जेक्ट पे कर रहे हैं, जो हमने दिखाई दे रहा है कि लोगों को डायरेक्ट पैसे देते हुए सीएम का नाम उसमें दर्ज करना और कुछ अधिकारियों को जो रिटायर्ड हुए हैं उन अधिकारियों को पूरी तरह चुनाव के काम में लगाना, गवर्नमेंट के कामकाज के लिए लगाना, ये सारी बातें या एडवर्टाइज भी हो तो एक तरफा गवर्नमेंट की चलाना, इस तरीके से बहुत सारी बातें हमने निर्वाचन आयोग के सामने रखी हैं और वो उन्होंने कहा है कि हम जरूर सोचेंगे इसके बारे में, जो भी बातें हैं वो उस तरीके से डायरेक्शन देंगे. मतलब तेलंगाना चुनाव में फेयर इलेक्शन जारी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कम फिरियाद दिए. वहाँ पर IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स वो TRS पार्टी के लिए काम कर रहे हैं. हमारा DGP है अंजनी कुमार, वो आंध्र प्रदेश कैडर ऑफिसर है. ही कैनॉट कंटिन्यू एज अ DGP ऑफ तेलंगाना. मिस्टर स्टीफन रविंद्रा मोर देन सैबराबाद कमिश्नर मोर देन 2 years हो गए, वो भी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं. और प्रभाकर राव IG रिटायर्ड हो गया 4 साल पहले, उन्होंने कंटिन्यू कर रहा है. इंटेलिजेंस एंड SIB का काम देख रहा है. वेणुगोपाल राव, प्रणीत राव, भुजंग राव, जगनमोहन राव, बहुत सारे KCR के रिश्तेदारों को रिटायर होने के बाद फिर ड्यूटी पे लेकर टेलीफोन टैपिंग, टेलीफोन हैकिंग एंड हमारे ऊपर निगाह के लिए पूरा इंटेलिजेंस व्यवस्था को अपोजिशन पार्टी के ऊपर इस्तेमाल करें, उसके बारे में हम कंप्लेंट किए. और IAS ऑफिसर्स लाइक अरविंद कुमार, सोमेश कुमार, रजत कुमार, ये सब सारे लोग भी KTR के मिनिस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ भी हम लोग फिरियाद किए. नवंबर 3 से शुरू हो रहा है, वहाँ से लेकर चुनाव हो गए तक लिकर बैन करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया हुआ है. ये सब सारे मुद्दों पे हम चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम रिप्रेजेंट किए, उसके ऊपर कार्रवाई चलने के लिए हम रिक्वेस्ट किए. We brought it to the notice of the Election Commission of India that elections have probably become most corrupt in the state of Telangana from the time this BRS party has come to power. We brought to the notice of the Election Commission that during the 2018 assembly elections, while the election process is on, right up to polling day, government money is being distributed by bank transfers to the beneficiaries. We have appealed to the Election Commission that other than pensions and such like humanitarian assistance, from notification day till polling day, to stop the disbursement of cash benefits from notification day to polling day, which is about 27 days. Either do it before or do it after.